So we're dealing with market structures. It was actually chapter number 5. We've done chapter number 3, जिसके अंदर we had a discussion on the theory of cost, and we made the marginal and the average cost curve, which will be relevant for our case over here. And then we did the revenue profit theory, जिसके अंदर we did the perfect markets and the imperfect markets. So that discussion along with the cost is going to be our major focus over here. Now, whenever we're doing the market structures, let's just introduce this idea first that कोई भी industry हो, किसी भी product की industry हो, whether it is automotive, hoteling industry, food industry, vegetable industry, any kind of industry that you have, textile वगैरह, they are divided into categories according to कितना competition है, ठीक है? और वो कंपटीशन किस तरह से पता लगता है? इट डिपेंड्स ऑन द फीचर्स दैट इट हैज. Okay, so in our market structures, every structure we're going to study, we're going to look at their certain specific features, and those features give them certain advantages or certain situations through which उनकी competitive levels change होते रहते हैं. So being said that, the 4 structures that we're going to be studying today, we're going to deal with the extreme ends. We're going to deal with perfect competition. Okay, we're going to be dealing with the perfect competition, and we're going to be dealing with the monopoly over here. These are the first 2 that we're going to study. But obviously, perfect competition comes from the perfect market. Okay, और बाकी ये जो 3 हैं, जैसे ये परफेक्ट मार्केट का हिस्सा है जो कल हमने किया था, प्राइस टेकर्स भी स्पोक अबाउट, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी जितनी भी हैं ये सब इम्परफेक्ट मार्केट्स की. परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि दे आर द प्राइस टेकर्स and the rest of them are the price makers. They will decide on their own prices, and obviously there are certain bases behind it. So moving on the basic, let's take a look at this one. Right, so under perfect markets, perfect competition, we say number 1 feature, number of firms. There are many firms, and there is unrestricted entry. Anyone can enter the industry. The product's nature is the product is similar, identical, homogeneous, like cabbages, carrots, eggs, milk. Milk में तो थोड़ा बहुत changes आने शुरू हो गए. I would say even like the mask, ये जो mask चल रहे थे आजकल कोविड के दौरान, even these masks are pretty much perfect competition. It's really difficult for us to tell the difference if there is no packaging. Because they all look the same and probably all have exactly the same function too. So कोई खास कोई फर्क नहीं है. So I would think that they are even identical to quite a degree, unless they say otherwise. इसका जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है. इलास्टिसिटी के हिसाब से it's perfectly elastic, and they are the price takers. The other extreme that we're doing today is monopoly. Monopoly के अंदर there is a single seller from comparison. The barriers or the freedom to entry and exit is highly restricted. Okay, the nature of the product is unique. Examples could be, I think, Facebook, हमारे यहाँ कराची इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान रेलवे. इसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, and from the elasticity's point of view, I think it's very steep. It's inelastic because there is no close substitutes. So this is what the monopolies are. This is like our comparison, extreme ends. Okay, so let's take a look at परफेक्ट कंपटीशन के मेन फीचर्स जो तुम्हारे हर ऐसे के अंदर होने चाहिए, लाजिम है. So every time you're going to be explaining, the first few things are important. Number 1, the products are homogeneous. Number 2, there are many buyers and many sellers.
with the important information right here. There is perfect information in the market. What does that mean? That the number of buyers, the number of sellers, there are plenty, and they all have all information available. ठीक है, कंज्यूमर को पता है कहाँ पे कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है, प्रोड्यूसर्स को पता है कौन कहाँ पे कितने का बेच रहा है. When you have all this information and there's perfect knowledge, you cannot fool anyone, and the price tends to become a single price for the market. उसके बाद we say कि markets के अंदर हर फर्म के पास equal shares है और सबके पास सेम टेक्नोलॉजी है, किसी के पास कोई खास डिफ्रेंसिएशन नहीं है. उसके अलावा वी जस्ट मेंशन्ड देयर इज नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, एनीवन कैन एंटर, एनीवन कैन एग्जिट. एंड पॉइंट नंबर 5 ये अभी हम डायग्राम्स के साथ करेंगे, बट जस्ट टू प्लांट द आइडिया वी सेड शॉर्ट रन के अंदर यू मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, इकोनॉमिक लॉसेस, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर यू विल ऑलवेज मेक नॉर्मल प्रॉफिट. What they are, we had a discussion on this yesterday, but we will discuss it today as well. Revenue profit theory के अंदर this is what we did. An industry for carrots with total demand and total supply, we decided 10 million carrots का काम हो रहा है और पर केजी की प्राइस है $1. ये इंडस्ट्री के अंदर डिसाइड हुआ है. जो एक सिंगल फर्म है, दे हैव नो चॉइस बट टू टेक द प्राइस फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो व्हेन दे अस्यूम द प्राइस फ्रॉम द इंडस्ट्री, यहाँ पे उसका डिमांड MR, AR और P सब इक्वल होता है. अगेन फॉर दिस व्हाई दे आर ऑल इक्वल, यू गो ऑन चैप्टर नंबर 4 एंड यू टेक अ लुक एट इट अंडर परफेक्ट मार्केट्स. What's happening right now is if this was my profit maximizing firm with a profit maximizing objective, the profit maximizing objective in chapter 4 we concluded with this idea that MR equals to MC is your objective. Since MR is the same thing as price in this case, I can even say P equals to MC. Even that's fair, and that's my condition. So if that's my condition, in my diagram I have the MR but MC is missing. So let me place in the MC curve, which as we've done plenty of times, looks like this. That's our marginal cost curve, which resembles a lot like a supply curve, at least the later portion, not the earlier one, because this is probably not even counted because your average variable cost would be higher than this range. But anyhow, so based on this idea of ours, P equals to MC या MR equals to MC, a single firm has decided कि देखो ये हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है, हम इतना आउटपुट बना सकते हैं, प्राइस हमको इंडस्ट्री ने बता दी है, तो ऑन दैट नोट हमारा डिमांड और सप्लाई की इंटरसेक्शन पे हमें Q1 की क्वांटिटी बनानी है एंड वी विल प्रॉफिट मैक्सिमाइज. अब किस किस्म का प्रॉफिट होता है, क्या नॉर्मल होता है कि एबनॉर्मल होता है, दैट डिपेंड्स ऑन एवरेज कॉस्ट किधर है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरेज कॉस्ट राइट नाउ, बट फॉर नाउ वी हैव डिसाइडेड व्हाट इज द क्वांटिटी दैट नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड. क्या ये क्वांटिटी चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. अगर इस परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, लेट्स से इनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है, तो फिर ये MC कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा. एंड व्हेन दैट हैपेंस, इनकी जो क्वांटिटी है, डोंट मेक दिस, बट इफ दैट हैपेंस द क्वांटिटी कैन फॉल डाउन. बट व्हाट हैपेंस टू द प्राइस? नथिंग, because they are price takers. They cannot dictate the price. Price can only change if, let's say, industry के अंदर न्यूज़ आ जाती है कि कैरेट जूस या कैरेट कंजम्पशन से कोविड के सिम्टम्स चले जाएंगे. तो as a result, what's going to happen is that the demand for carrots in the industry overall is going to rise. And when that happens, the overall price for carrots in the industry will jump up.
And when that happens for a single firm, uh, that's good news, because what's going to happen for them is the demand curve is going to jump up. And on that note, the new MR equals to MC will be at a higher quantity. So, in conclusion, the firms cannot have an effect on the price. Industry can have effect on the price. The firm can only increase or decrease the quantity by changing their supply capability. That's the only possibility they have. So, moving on. Now we're going to learn how to make profits, okay, diagram in the short run and in the long run. Okay. So there are steps to it. We're going to be making lots and lots of diagrams today. So steps are, number one, perfect competition की बात हो रही है. Okay. So demand curve बना लेते हैं. And our demand curve is equals to average revenue curve, which is equals to marginal revenue curve, which is equals to price. This was given to us by the industry. Next, we need a marginal cost curve. That's our marginal cost curve. Next, what's the objective? Well, the objective is not written anywhere. It just says short run profit and losses under perfect competition. So if no objective is given, I will assume it's a profit maximizing perfectly competitive firm. That's how it would work. No objective given, that means it is the single most important objective, which is profit maximization. So based on this idea, P is equals to MC. That means I am going for my profit maximizing objective. Now first diagram I'm going to make for normal profit. Normal profit क्या होता है? Normal profit accountant के हिसाब से तो positive profits है, लेकिन इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवर्ड है, जस्ट कवर्ड है. तो दैट मीन्स कि या तो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट है, एंड द अदर कंडीशन वाज कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट. वन वुड से देयर इज अ ब्रेक इवन, बट देयर इज नॉट अ ब्रेक इवन. द थिंग इज बेसिकली इस कॉस्ट के अंदर explicit and implicit costs both are involved. So you are making a decent profit of your opportunity cost being covered. And again, you go into chapter number 4 and you take a look at that and you will understand what I mean by this. So average revenue equals to average cost की condition चाहिए. कहाँ पे चाहिए? At QO, because this is what our condition was. QO पे सारा काम हो रहा है. तो QO के ऊपर ये रहा एवरेज रेवेन्यू. एवरेज कॉस्ट तो मिसिंग है. एवरेज कॉस्ट का होता है यू शेप. ये चैप्टर नंबर 3 में देखा है हमने. और जब यू शेप आता है तो यू शेप की कुछ खास बात ये होती है कि यू शेप का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट पे इंटरसेक्ट करता है, एंड देन इट गोज ऑन इट्स वे अप. एवरेज कॉस्ट हैज अ मिनिमम ऑन मार्जिनल कॉस्ट. That's a must. Okay. So over here, let's see what's happening. In fact, let me not write this. I'll write average revenue is equals to average cost here. And that's true. The black line of average revenue is intersecting the purple line of average cost right here at QO. That means we have a normal profit. Profit maximizing bhi hai aur normal profit kar rahi hai at the same time. Moving on. I'm not dealing with the efficiencies here. Okay, efficiencies I'm ignoring. Let's do it one more time. First things first, demand curve. Label it. And then you have the marginal cost curve. Wherever they intersect, P equals to MC. That's my profit maximizing conditions.
output levels. Now, second, I'm dealing with abnormal profits. Abnormal profit occurs when your total revenue is greater than your total cost. Good money, more than your opportunity cost. What you have given up in something else, you're covering with that also, and you're making more money. शाबाशी वाली सिचुएशन. दूसरी उसकी कंडीशन ये है कि एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. अब एवरेज कॉस्ट का डायग्राम बनाना है हमने. सो द थिंग इज, वन थिंग आई नीड टू मेक श्योर इज कि क्यू ओ की क्वांटिटी तो हम फॉलो कर रहे हैं. इस क्वांटिटी के ऊपर एवरेज रेवेन्यू ब्लैक लाइन इज राइट हियर. क्योंकि मुझे एवरेज रेवेन्यू शुड बी हायर देन एवरेज कॉस्ट, सो एवरेज कॉस्ट नीड्स टू बी ऑन द लोअर साइड. ओके, लेकिन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उसको मार्जिनल कॉस्ट पे बनाऊं. सो इजी वे वुड बी आई पुट अ मिनिमम का पॉइंट ओवर हियर एंड आई मेक माई कर्व गोज अप लाइक दिस, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे मिनिमम पॉइंट्स आर टेकन केयर ऑफ. Now what's happening here is QO के ऊपर this is where my average cost is. Let me do the marking. Right here QO के ऊपर average cost is right here. And average revenue is right up there. तो ये जो vertical distance हो गया, ये मेरा abnormal profit दिखा रहा है per unit. यानी QO के ऊपर एवरेज का मतलब ही पर यूनिट है, तो एक यूनिट के ऊपर ऑन एवरेज मैं इतना रेवेन्यू कमा रहा हूँ, एक यूनिट पे ऑन एवरेज जितनी कॉस्ट मैं पे कर रहा हूँ, तो ये पर यूनिट एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया. और मैं कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, क्यू ओ की क्वांटिटी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मेरे पास एरिया आ जाएगा. दिस बिकम्स माई एबनॉर्मल प्रॉफिट. एबनॉर्मल प्रॉफिट, टोटल एबनॉर्मल प्रॉफिट. अगर पर यूनिट पूछ रहे होते तो ये पर यूनिट है, इनटू क्वांटिटी ये टोटल है. दिस इज हाउ माय एबनॉर्मल प्रॉफिट इज मेड. लेट्स गो वन मोर टाइम. सेम प्रोसीजर. वी हैव अ डिमांड कर्व. वी कॉल इट place in your marginal cost, mark the QO quantity. Now we're going for economic loss, or also known as the subnormal profit. I personally prefer economic loss. In this one, probably your total revenue is less than total cost. That's for sure. You're losing money economically. The second condition is average revenue should be less than average cost. That means your average cost should be greater. So QO के ऊपर, और वो भी कहाँ पे, at QO ना, सारा डिस्कशन ही QO पे है because profit maximizing firm है. So QO के ऊपर average revenue is the black line. We need the average cost to be on the higher side anywhere. Okay. बट वॉट आई नो इज कि उसका मिनिमम पॉइंट जो है वो एम सी पे होता है. सो इट्स ऑन द हायर साइड. एक तरफ ऐसे ले गए, दूसरी तरफ ऐसे ले गए, ये मेरे एवरेज कॉस्ट आ गए. और फिर मैंने मार्किंग करी कि ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है और ये मेरा एवरेज कॉस्ट है. द रेड डॉटेड लाइन शोज माई इकोनॉमिक लॉस पर यूनिट. फिर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ये सारा मेरा इकोनॉमिक लॉस, टोटल इकोनॉमिक लॉस is represented through this. So by looking at this diagram we can see there is this green area, and फौरन से इसको देखो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के ऊपर एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट लोअर साइड पे है, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है. अगर ये परफेक्ट कंपटीशन है, हाउ डू आई नो परफेक्ट कंपटीशन है? डिमांड का फ्लैट है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकता है. शॉर्ट रन के अंदर अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो दैट मीन्स तुम शॉर्ट रन में हो, ये तो गारंटीड बात है. क्योंकि
लॉन्ग रन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है. क्यों? लेट्स डील विद दैट सिचुएशन. So carefully look at the diagram. What we have is demand and supply, original price. A single firm took the price from the industry and assumed it, तो उनका डिमांड कर्व हो गया फ्लैट परफेक्टली इलास्टिक. उसका अपना जाती मार्जिनल कॉस्ट कर्व आया. P इक्वल्स टू एम सी की बेसिस पे या एम आर इक्वल्स टू एम सी की बेसिस पे क्वांटिटी डिसाइड हो गई. और जब क्वांटिटी डिसाइड हो गई तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से QO की प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी है. इसी क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट इधर है. एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट सेम थिंग. और एवरेज रेवेन्यू ऊपर है. पर यूनिट एबनॉर्मल प्रॉफिट इनटू क्वांटिटी. द ग्रीन एरिया रिप्रेजेंट्स एबनॉर्मल प्रॉफिट. मास्क की इंडस्ट्री के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं क्रेजी तरह से. प्रोडक्ट भी बड़ा सिमिलर आइडेंटिकल है और कोई बैरियर्स ही नहीं है. तो जो कपड़े बेचते थे उन्होंने कहा कपड़े तो बिकने नहीं है, यही काम कर लेते हैं. दे स्टार्टेड मेकिंग मास्क्स. A lot of firms started entering the industry, and as they're entering the industry, क्योंकि प्रोडक्ट आइडेंटिकल है तो मास्क इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई बढ़ती जा रही है और प्राइस गिरती जा रही है. 1800 रुपये पर बॉक्स से प्राइस गिर के 250 रुपये पे आ गई. ना कौन कौन सर्वाइव किया होगा? प्रॉब्ली हार्डली पीपल जो नए आए थे. सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज, let me do the other way around just to show exactly how we're going to do it. Now in the right diagram basically हमको उस वक्त तक जब लेफ्ट डायग्राम के अंदर सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिरती है. प्राइस गिरती है तो यहाँ पे डिमांड कर्व नीचे आएगा. हमने देखना है उस डिमांड कर्व को हमने किस पॉइंट तक नीचे लेकर आना है. जब तक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो जाता, और नॉर्मल प्रॉफिट होता है इधर, जस्ट लाइक वी डिड द डायग्राम. P इक्वल्स टू MC भी हो रहा है और एवरेज कॉस्ट मिनिमम और एवरेज कॉस्ट का इंटरसेक्शन भी हो रहा है. सो वी नीड द डिमांड कर्व टू गो डाउन. ओके, और वो ऑब्वियसली इंडस्ट्री बताएगी. ये तो मैं तुम्हें सिर्फ एक परफेक्ट डायग्राम बनाने का शॉर्टकट बता रहा हूँ. जो फर्म्स एग्जिस्ट करेंगी की क्वांटिटी कम हो जाएगी. सो बेसिकली टेक्निकली व्हाट्स हैपनिंग इज दिस सप्लाई कर्व is going to shift to the right to the level कि जो प्राइस है P1 की, और जब फर्म अस्यूम करेंगी वो P1 की प्राइस, तो नॉर्मल प्रॉफिट अचीव होगा. सो सप्लाई इंक्रीजेस, shifts to the right, causes the price to go down. Single firm will see the demand curve going down. When demand curve goes down and the price goes down, movement along the supply curve, they will have to produce less to the market. In this one, what we are seeing is, let's see, demand, supply, market price. The price is assumed by the firm and they have their own cost structure. MR equals to MC, P equals to MC, they decided on the quantity. And on this quantity, they see the average revenue is higher, average cost is higher than average revenue, and they're making an economic loss. Now, economic loss अगर हो रहा है perfect competition में, तो again you're in the short run, because economic loss is only possible in the short run. Because what's going to happen in the long run is that you have to somehow reach the normal profit. अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा? बेसिकली when some firms will not be able to survive the losses, they're going to exit the industry. And when they exit the industry, the supply curve will start shifting to the left till a specific point. Supply curve shifts to the left. You have new supply curve. And as a result of this, there is a new price in the market, P2. And this price has to be taken by this single firm of P2 key price. And when they do that, this is what happens.
your MR curve, the demand curve, the average revenue curve, it jumps up. And when it jumps up, all those firms who survive the industry ends up getting more orders, they start selling at a higher price, and they reach the normal profit right here. Average revenue 1 is equals to the average total cost, and normal profit is achieved. And this is happening why? Because losses make some firms exit the industry, causing the prices to go up. The firms who survive this will be able to sell it at a relatively higher rate, and so they'll have more volumes to do, and they will be in a much better position. Normal profit is achieved, their opportunity cost is achieved.